Shri D. Manya Sabhadyakshji, really I do appreciate the concern of my friend Shri Janata Sigriwal for moving this bill. Really, active participation in democracy, certainly more percentage of voting in the elections, it will strengthen the democratic traditions in the country. But such participation should come out from the people voluntarily rather than by coercion or allurements. The very voting right is a civil right. It is rather than a civil duty. While citizens may exercise their civil rights, but they are not compelled to do so. On the other hand, this compulsory voting may infringe the rights of each individual, each voter. We are fully aware of the Universal Declaration of Human Rights. Article 2 of the Universal Declaration of Human Rights says that, which guarantees the freedom of political opinion. It should not be by coercion we should go for any elections, which will certainly against the democratic principles. But the spirit of Janardhan Singh is certainly appreciable because more percentage of voting in the elections, there will be a decision which the intention in the minds of the people or the voter, which will give more strength to the democracy. This is not the first time, as rightly said by Professor Saugat Roy, this is not the first issue of compulsory voting discussed in the Parliament. But every time, either in 2004 by B.S. Rawat or in 2009 by Agarwal, both times deliberations went on for such a lengthy period. Even this also, I think, I don't know the exact number. Yes. 10 hours debate went on. Very good suggestions have come from various learned members of Parliament here. 53% have participated in the debate. Several viewpoints, several suggestions, which will certainly, if the Election Commission takes into consideration of all those issues, all those suggestions given by the various learned members, certainly the voting percentage will certainly go up. I have taken down everything. And certainly I am going to write to the Election Commission in the name of Janata Singh that these are the viewpoints of the Parliament members, so that which are possible that need to be implemented, but at the same time a democratic setup cannot be by compulsion voting or compelling them to vote or by penalizing them. It is against the democratic principles. Of course, in the last deliberations also during 2004 and 2009, ultimately the views that has been given by the Parliament members, that has been taken note of and it has been referred to the Election Commission. Several viewpoints that was advanced in the last debate also, that has been taken care of by the Election Commission. For that only the percentage of voting is going high and high. So today in so many parts of the country, we see that the voters, they are really en bloc, they are boycotting the elections across the country for various reasons, because they don't like the system. The elected representative, they do not perform their duties up to the expectations of the voters. So in various corners we have seen en bloc the boycott of elections. So we can't restrict those persons, because right to vote is right to not vote. So under democratic principles, a man should be given a free mind, wherein if he doesn't feel that I should vote for a certain person, certain candidate or certain political party, it is his wish to whom to vote or not to vote. So it should not be construed that a democratic setup, right to vote is only he must vote. It is not like that. Right to vote is right to not vote also. So
Even in earlier debate also, discussions also, it was suggested that the voters should be motivated. They should be they should feel that I should vote. It is my right. I should vote, and then only a proper election can be conducted under these present circumstances. People should motivated to rise to the occasion and feel pride to participating in democratic process of election of their representatives. Of course, several committees earlier have been formed, that Tarkunda committee, Dinesh Goswami committee, even the political parties have held a meeting on 22nd May 1998. All political parties participated. Even Law Commission, the matter was referred to the Law Commission, and even Law Commission in its 255th report has given an elaborate and detailed study and came to an opinion that compulsory voting is not possible and not feasible also for this country. And so they said that they does not recommend the introduction of the compulsory voting in India. In fact, believes it is highly undesirable for the variety of reasons described above, such as being undemocratic, illegitimate, expensive, unable to improve quality of political participation and awareness, and difficult to implement. Sir, after coming to this conclusion by various committees and even after getting the report of the Law Commission, the Election Commission started creating awareness with the voters and motivating them to vote and reminding their rights in the, and it is the need of the hour they should come and vote. The Election Commission has several occasions, has taken up several initiatives. Now every year 25th January is National Voters Day that we are celebrating, with several activities are conducted, and we are motivating the people to vote, and several medias, print media, electronic media are widely used to motivate them, even sending SMS. Nowadays Election Commission even going to the house of the voter and issuing slips and reminding him that you should come and vote. These are the several initiatives that has been taken by the Election Commission. Now voting percent has gradually increased. Last in general elections, the voting percentage was nearly 66.4%. Nearly 66.4%. Of course, last election, in the voter list, it was 84.3 crore people were enrolled as voters, out of which 66% voting was done. Well, I would like to bring one issue before this House, that several, as rightly said by my senior Professor Sagat Rai, that in various countries they have tried it. Small countries it may be possible, because you see in the last elections it was 64% out of 84 crores. 64% means nearly 25 crores they have not voted. Is it possible to identify all those persons? In our country, so many employees, they are working in some other places. Laborers are traveling from one corner to another corner, and they are working there for their livelihood. So is it possible to penalize everybody, 25 crore or more people at one stretch? It is highly impossible exercise that could be done in our country. Only thing is, we have to motivate, we have to find an alternative solution to see that the migrant laborers should be given voting right wherever they may be. So now latest technologies are coming. We want to introduce the latest technologies so that voting fashion has to be changed and they should be made to vote. That is the only alternative that will be available for the country to see that more and more percentage should come and vote. Even countries, several countries that
as rightly said by Professor Thaugat Roy, that Fiji, even Austria, Egypt, Greece, Mexico, Paraguay, Thailand, they have stopped enforcing once they started this compulsory voting, they brought a legislation, but within a very short period they came to know that it may not be possible to implement. When such small countries could not be able to implement the compulsory voting process, how a country like India, more than 125 crore people, how it could be possible to implement? It is highly impossible to implement, and penalizing the voters, it cannot be done at this juncture. Under these circumstances, the only way that is available for us is to see that, take good suggestions from various corners, use more and more technology in voting. We can see earlier ballot paper was there, now it has gone, even voting machines are there. Earlier nobody was going to the house of the voters, now the election commission itself made it a point to visit the house of the voter and motivate him to come and vote. So percentage is also increasing day by day. Under such circumstances, compulsory voting cannot be possible, and it may not be possible in country like India. But Janardhan Singh, my friend Janardhan Singh's intention is to see that almost all the persons should vote so that democracy will become more and more vibrant. So I would like to make one appeal to Janardhan Singh ji. Let him please withdraw the bill. I have noted all the suggestions that has been given by various members in this house, and certainly the suggestions that will be it will be referred to the Election Commission, and the Election Commission will be requested to implement the suggestions that has been given by the various members. Ultimately, the more and more percentage voters should come and vote so that we can make the democratic process strengthen. We will strengthen the democratic process in India. So I request Mr. Janardhan to withdraw the bill, and certainly I will assure him that his vision that compulsory voting will strengthen the democratic principles, we will do it by the process through Election Commission, and Election Commission will be also motivated that he should take care of all the suggestions that has been given by the various members. Sir, so many electoral reforms are need of the hour. So many electoral reforms, because day by day we find that, as rightly said by various members, money power, muscle power, and other so many things are making this election process in such a way the people feel that this election itself is something which doesn't suit the present situation of the country. So under such circumstances, when the requests and requirements which the Janardhan Singh Trivedi made out in his bill, Sigriwal, it may not be possible to implement at this juncture, because by the other processes only we should make more and more persons to motivate to come and vote. So under such circumstances, I request Janardhan Singh Sigriwal to withdraw the bill, and his intention will be fulfilled by making the Election Commission to run in those directions, and certainly a day will come, his intention will be fulfilled in this country. Thank you. सिग्रीवाल जी, सब लोगों की राय है। सभापति महोदय, यह लोकतंत्र के लिए अनिवार्य मतदान मैं समझता हूं कि बड़ा महत्व का है, और पिछले कई एक घंटों तक इस पर चर्चा भी हुई है, और इस पर हमारे माननीय 53 सदस्यों ने, अलग अलग दलों के, उन्होंने अपने विचार भी रखे हैं,
और उसमें से हो सकता है कि इक्का दुक्का सदस्य के विचार भले इससे मिलता जुलता न हो, लेकिन 99.9% सदस्यों ने, जिन लोगों ने विचार रखा है, जिन लोगों ने नहीं भी रख पाया है अपना विचार, वह भी मिलकर के ऐसी बातें की है कि अनिवार्य मतदान होना चाहिए। महोदय, चुनाव लोकतंत्र का पहला राष्ट्रीय उत्सव होता है। सभी लोगों को इसकी पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, हम रखते भी हैं। आखिरकार कोई भी लोकतंत्र तभी सफल होगा जब लोग इसकी सुरक्षा करेंगे, और हमने इसकी सुरक्षा की भी है। हमें गर्व है कि आज हमारा संसदीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा लोकतंत्र है। महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों द्वारा बताई गई कमियों के बावजूद हम सब इसका हिस्सा हैं। हमारे देश में, हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि भारत का संविधान विरोधी संकल्पों का दस्तावेज है। कई एक पक्ष, कई एक विपक्ष उस दस्तावेज में भी इंगित है। हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश का भी बहस पसंद भारत कहा गया है। यह दुनिया में इसकी एक अलग पहचान है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। हर जगह विरोधाभास है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक व्यक्ति के बीच हमारे यहां विरोधाभास है। मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि महोदय, हमें और हमारे शरीर में सिर्फ पानी ही पानी है। लेकिन महोदय, जब आप शरीर में कहीं चोट लगती है तो पानी नहीं निकलता, खून निकलता है। हम यह कहते हैं कि हृदय से भरा है, हमारा हृदय खून से भरा है, लेकिन जब हृदय को कोई चोट पहुंचती है तो आंसू निकल जाता है। महोदय, यह विरोधाभास है। शरीर में कहते हैं कि पानी ही पानी है, चोट लगने कटने पर खून निकलता है, और हृदय को कोई आघात लगता है तो वहां से खून न निकल करके आंख से आंसू निकलती है। महोदय, यह हमें कहने में जरा सा भी कोई बात नहीं। महोदय, यह एक विरोधाभास है, लेकिन हम इसी विरोधाभास में जीते हैं और इस विरोधाभास में ही फल फूल रहे हैं। यही कारण है कि यहां विविधता में एकता वाले भारत के एक परिदृश्य की सुंदर अवधारणा है। महोदय, अनिवार्य वोटिंग होने से इस देश में कई एक बीमारियां एक साथ दूर हो जाएगी। माननीय मंत्री जी अभी बोल रहे थे, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हुए कहना चाहता हूं, जैसे मसल पावर, अपने यहां महोदय मसल पावर का उपयोग होता है चुनाव में, इससे आज भी इनकार नहीं किया जा सकता। यह एक बीमारी है जो अनिवार्य मतदान से यह दूर हो जाएगी। धनबल का प्रयोग वोटिंग के समय काफी यह होता है, यह भी बीमारी इससे दूर हो जाएगी। इसके अलावा पिछड़े वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जब वोट करने जाते हैं, उन्हें वहां कहा भी जाता है आज भी कि आपका वोट पड़ गया है, आप चले जाइए। महोदय, यह भी बीमारी अनिवार्य मतदान से दूर हो जाएगी, और यह छोटी बीमारी नहीं है, यह एक बड़ी बीमारी है जो दूर होगी। महोदय, दुनिया के लगभग, हमारे कुछ मित्र बोल रहे थे कि कई एक देशों ने अनिवार्य मतदान शुरू भी किया, बंद भी किया, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जिन देशों ने, भले इसमें ब्राजील जैसा देश भी है जिसकी भारत से कई बातों में समानता है, भारत के समान वह देश भी बड़ा देश है, जनसंख्या भी काफी है। ऑस्ट्रेलिया, इटली के साथ ब्राजील जैसे देश ने भी अनिवार्य मतदान की प्रक्रिया अपना ली है। इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। मतदान में 3 अपनाई जाने वाली बैड प्रैक्टिस जैसे समस्या का समाधान हो जाएगा। कुछ लोग दारू बांटते हैं महोदय, कुछ लोग पैसा बांटते हैं, उससे छुटकारा मिलेगा। धनबल बाहुबल में कमी आएगी और कमजोर वर्गों के वोट सुरक्षित हो जाएंगे।
किसी और समुदाय द्वारा वोट देने के भय से मुक्ति मिलेगी तथा लोगों का सही प्रतिनिधित्व होगा। महोदय, आज इस पर चर्चा हम अपने देश में ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी चर्चा हो रही है और महोदय इसको लोग असंभव भी कहते हैं। महोदय, जब टीएन शेषन इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे तब वोटर आई कार्ड शुरू हुआ था। बड़ी चर्चा हुई कि वोटर आई कार्ड कैसे बन पाएगा, वोटर का आई कार्ड बनना तो असंभव है। लेकिन महोदय, मैं आपको जानकारी भी है, लेकिन मैं सदन में यह बताना चाहता हूं कि अभी तक हम वोटर आई कार्ड जब ऐसा किया गया था तभी लोगों ने कहा था कि यह प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन आज बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां 90 से 95% तक, बहुत सारे ऐसे राज्य भी हैं जहां 99% तक वोटर आई कार्ड बन गया है। महोदय, यह अपने सोच और अपने करने पर यह निर्भर करता है और हम कितना बल से, कितना ताकत से इस बात को रखते हैं, इस पर भी यह निर्भर करता है। महोदय, एक बार मैं यह वाकया बताना चाहता हूं। एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी अमेरिका गई थी, तब वहां के प्रेसिडेंट मिस्टर निक्सन थे और वहां कोई समझौता होना था और उस समझौता में अमेरिका अड़चन डाल रहा था या उससे राय को नहीं मान रहा था। तब एक दिन पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि अगर समझौता नहीं होता है तो मेरा इस देश में एक क्षण भी रहना उचित नहीं है। और उन्होंने अपने जो साथ में अधिकारी थे उनको कहा कि मैं भारत वापस जाऊंगा, जब समझौता नहीं होगा तो फिर यहां मैं नहीं रह पाऊंगा। और महोदय, यह एक सामान्य एक दबाव, एक मानसिक प्रेशर ने अमेरिका से उसे समझौता को करने के लिए बाध्य किया और अमेरिका के प्रतिनिधि और मिस्टर किन्सर, वहां के राष्ट्रपति, उस समझौता पर अनदेखी न कर करके उस पर समझौता करने का काम किया। और महोदय, यही हमारी लोकतंत्र की शक्ति है और इसे अनदेखी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह है हमारे लोकतंत्र का सौंदर्य भी है, लोकतंत्र का मर्यादा भी है। महोदय, ऐसा ही एक बार और हुआ था जब पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी, तभी हमने वह ताकत दिखाई और यह दिखाया कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कोई अकेले व्यक्ति नहीं होता, वह देश के 125 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, देश के 125 करोड़ लोगों का इतिहास बनाता है, 125 करोड़ लोगों की ताकत अपने पीछे रखता है, उनकी सोच और समझ रखता है, उनकी हमदर्दी रखता है। इसलिए जब हम उन्हें यह बात कहते हैं, हमें कमजोर जो समझता है उनके ऊपर यह लगता है कि नहीं, यह भारत कमजोर नहीं है। और उन्होंने हमें, जो पाकिस्तान और जो दुनिया के लोग यह समझते हैं कि एक धोती में आजादी लेने वाला या महात्मा गांधी हिंदुस्तान को ज्यादा दिनों तक आजाद और आगे नहीं ले जा सकता, लेकिन शायद वे भूल गए कि हमारा बहुत पुराना इतिहास है, हम अपनी संस्कृति से बंधे हुए लोग हैं, हम मोहब्बत से बंधे हुए लोग हैं, हमारे अंदर सांप्रदायिकता नहीं सद्भावना है। इसलिए हमारे देश में हर 50 किलोमीटर पर भाषा भले बदल जाती है, पहनावा बदल भले जाता है, लेकिन आज भी हम एक दूसरे को भाई कहते हैं, गले लगते हैं, मिल करके चलते हैं और मिल करके वोट देते हैं। तब महोदय हिंदुस्तान बनता है और तब ऐसे भारत की परिकल्पना हम आज करते हैं। भारत विविधता में एकता का देश है महोदय। इस शब्द का महत्व विचारधारा संबंधी पुस्तकों में नहीं बल्कि हमारे जीवन के सभी पहलुओं में है और उसमें इस देश की राज्य व्यवस्था भी शामिल है महोदय। सभापति महोदय, चुनाव किसी लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, बल्कि मैं तो इसे लोकतंत्र का उत्सव कहता हूं और हम सब उसको मानते भी हैं। हम यह उत्सव और यह उत्सव मानते हुए यह लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है जब चुनाव और चुनाव की प्रक्रिया में हम सब भाग लेते हैं। महोदय, वस्तुतः स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव काफी हद तक 3 हितधारकों के कार्य निष्पादन पर निर्भर करता है। वे है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तंत्र, राजनीतिक दल और उम्मीदवार और मतदाता। ये 3 हितधारक हैं और उन सभी को जिम्मेवारी से हम काम करना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में महोदय प्रत्येक व्यक्ति को कतिपय अधिकार है
जिसमें अन्य बातों के साथ साथ मतदान का भी एक अधिकार है। महोदय, हमारे माननीय लॉ मंत्री जी एक काफी सुलझे हुए, एक काफी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, और इन्होंने कहा कि हो सकता है कि प्रैक्टिकल हम इसको नहीं कर सकते, लेकिन महोदय अगर अनिवार्य मतदान की बात अगर हम इस भारत में करते हैं तो दुनिया में इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और आज अमेरिका जैसे देश भी इस पर बहस कर रहा है। बहस करने के लिए वह बाध्य है कि हमें अनिवार्य मतदान करना पड़ेगा, क्योंकि to insist on voting and to get it passed. हेलो, नो नो, पास भी कराइए आज, आप इंसिस्ट करिए कि महोदय पास किया जाए। महोदय 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 देश में अनिवार्य मतदान भारतीय लोकतंत्र में नई जान फूंक सकता है। दुनिया के 32 से अधिक देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था है। यह व्यवस्था अगर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में लागू हो गई तो उसकी बात ही कुछ और होगी। यदि दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान करना अनिवार्य हो गया तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पुराने और सशक्त लोकतंत्र को भी भारत का अनुसरण करना पड़ सकता है। हालांकि भारत और उसकी समस्या एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। भारत में महोदय अमीर लोग वोट नहीं डालते। महताब साहब बोल रहे थे कि गरीब लोग वोट नहीं डालते। महोदय, गरीब तो यहां वोट डालना चाहता है, उसे रोका जाता है, लेकिन यहां अमीर लोग वोट नहीं डालते। महताब साहब, मैं आपको यह चूंकि हो सकता है कि आपके राज्य में यह हो सकता है कि गरीब लोग और अमीर लोगों में खाई हो, लेकिन बहुत जगहों पर गरीब लोग वोट डालने के लिए उत्सुक रहता है। बड़े लोग उस दिन की छुट्टी मनाते हैं, पिकनिक मनाने चले जाते हैं, घर में नए नए कैसेट मंगा करके और नए नए फिल्मों का आनंद लेने का काम करते हैं। महोदय, भारत इस तथ्य पर जो गर्व कर सकता है जितने मतदाता जो 25 करोड़ वोट नहीं दे रहे हैं उसमें धनी आदमी कितने हैं? ज्यादा से ज्यादा ही 90%, ज्यादा से ज्यादा गरीब हैं। धनी महोदय धनी 25 करोड़ महोदय धनी का करोड़ से ज्यादा लोग वोट दे रहे हैं, 25 करोड़ वोट नहीं दे रहे हैं। 25 नहीं महोदय नहीं, मैं ये 25 करोड़ जो वोट नहीं महोदय जा रहे हैं उसमें ज्यादातर लोग गरीब हैं। नहीं महोदय, Practically, it is the latest, not exact statistics. More than 10 crore people are the migrant laborers in the country. Oh, more than 10 crore. Yes. Right from Assam, right from Bihar, they are traveling across either Mumbai, Kerala, even Bangalore. In Bangalore, we are having not less than 5 to 6 crores migrant laborers, sir, at present. So it is highly impossible for them. See, earning of their livelihood is more important rather than voting one day. That is their thinking. It should not be that. We should motivate them to vote. If latest technology and other things are brought into force, certainly after due course of time it may be possible. But say last elections there were 84 crore voters were there. 25.6 crore voters are not voted. Yes. Is it possible to penalize them, prosecute them and punish them? Is it possible? It is highly impossible for the country like this. But the intention of Janata Sigriwal is certainly it is quite appreciable. That every citizen of the country, they must vote, and thereby the democracy of the country should be very vibrant. That is his intention. I do appreciate. But countries like India, at present, without applying latest technologies and other things, unless the migrant voters, migrant laborers are properly identified and made to vote, it may not be possible for us to implement the bill. His intention is a good intention. I do appreciate.